type is fractional distillation. Fractional distillation is basically used to separate two liquids. Now, liquids can also mix with one another. In that case, we use the word miscible. Okay? If liquids were immiscible, we were using a separating funnel. That is pretty clear. We discussed the separating funnel usage. It made two different layers of liquids. First layer was separated off, bottom layer was separated off first, and then the top layer. Okay. So you already know how to use the separating funnel. But what if those liquids are miscible? They can mix with one another. They can dissolve into one another. Like water can be dissolved into milk. ठीक है आजकल का सबसे कॉमन प्रॉब्लम पाकिस्तान का चूंकि वाटर और मिल्क आपस में सॉल्युबल होते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो डाउट होता है अपने मिल्कमैन के लिए वो ये होता है कि वो वाटर को मिक्स करता होगा मिल्क में ठीक है कॉमन डाउट यही होता है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मिक्सेबिलिटी वाटर इज सॉल्युबल इन मिल्क मिल्क इज सॉल्युबल इन वाटर तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और फिर जो घर वाले होते हैं जो वो मिल्क को परचेज करने वाले होते हैं वो वाटर रिमूव करना उनके लिए आसान नहीं होता है ठीक है और प्लस ये डाउट्स भी होते हैं कि वाटर अच्छी सोर्स से था या नहीं था वगैरह वगैरह सही तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बेसिकली ये कर रहे होंगे कि अगर दो लिक्विड्स मिक्सेबल हैं एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं मिक्स किए हुए तो उन्हें सेपरेट कैसे करना है ये सिर्फ दो की बात नहीं दो से ज्यादा लिक्विड्स हों two liquids or more than two liquids we are going to separate them with the help of fractional distillation so let's straight come to our topic it starts from the bottom line separating of liquids from a mixture of two or more than two miscible liquids okay, is again based on the fact that the boiling point of one liquid the liquids have actually different boiling points okay? So boiling points अगर close हों closer होते हैं हमेशा solid and liquid solution के this thing is something that I cleared yesterday let's take the example again yesterday we were talking about table salt that we eat every day in water and I explained you that the boiling point of pure water is 100 degrees centigrade while that of table salt is around 1465 degrees centigrade so that's a huge difference but when we talk about two liquids the liquids अहमद कह रहे हैं कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या सारों को क्लियर नहीं आ रही मेरी वॉइस सर क्लियर है आपकी वॉइस सर इट्स क्लियर अच्छा अहमद दिता फिर आपके एंड पे इशू होगा अगर सारे स्टूडेंट्स को ना आ रही होती फिर मेरे एंड पे होता फिर मैं जरूर चेक कर लेता वैसे आज मैंने इंटरनेट कनेक्शन को चेक किया है डेफिनेटली इससे पहले रीस्टार्ट भी किया है क्योंकि कल की क्लास में हम काफी इफेक्ट हुए थे एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट so boiling points in case of liquids are quite close to one another okay we're going to take an example for that and you're going to understand from that example how they're closer to one another and how fractional distillation is beneficial just because the boiling points are close to one another but one point we need to keep in mind before we start off with the boiling points is that in case of fractional distillation the most volatile liquid in the mixture will distill out first and the least volatile will distill out or boil over last. Let's take an example. Alcohol, the drinkable alcohol, which is known by the name of ethanol in chemistry, boils at 78 degrees centigrade. Okay? And water boils around 100 degrees centigrade. So that's quite close. In case of water and salt, it was 100 and 1465. In case of alcohol and water, I mean ethanol and water, it's 78 and 100. Now 78 and 100 are far closer values than the ones we discussed before. Now in this case, fractional distillation is going to be beneficial. Now the last lines we studied says the most volatile liquid in the mixture boil over first. This means volatile means the one with the lower boiling point. Now, I have a question for, let's ask Arij. Arij, which of these two compounds has the lower boiling point and what's the boiling point? Sir, ethanol. And what's the boiling point, beta? Sir, 78 degrees Celsius. All right, good. Easy questions, right? I'm just making sure that we are sitting attentively. So, Abu Bakr, you are the next one. Beta, tell me which
liquid in the mixture will boil over last? Sir, water. And Abuka, why would that happen, beta? So because because it is less volatile. Very good, because it's the least volatile in this case, and it has the highest boiling point. Now, to answer that question, you have two ways. The book says deals with the word of volatility. However, you can simply answer in terms of boiling point. बेटा याद रखें, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले डिस्टिल हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में डिस्टिल होगा. लेट्स सपोज हम सिर्फ वाटर और अल्कोहल की एग्जांपल नहीं लेते. लेट्स सपोज हम खुद से कोई एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं. हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, W X Y Z. W 60 डिग्री पर बॉयल होता है, X 70 पर होता है, Y 80 पर होता है और Z 90 पर होता है. सो ऑफ कोर्स W पहले डिस्टिल आउट होगा, फिर X डिस्टिल आउट होगा, फिर Y डिस्टिल आउट होगा, और Z जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट 90 डिग्री सेंटीग्रेड है वो एंड में डिस्टिल आउट होगा. So no matter which examples you come up with and how many liquids there are in the example, the one with the least boiling point or most volatile means the same thing. ठीक है, distills out first, and the last one to distill out will be the one with the highest boiling point, or we can say it's the least volatile. I hope that's understandable. So when a mixture of two, water and alcohol, are heated, ethanol and water vapors enter the fractionating column. Let's take a look at it through the diagram. Let's take a look at the diagram. The diagram has an electrical heater at the bottom on the left-hand side. Then there is a solution of ethanol and water. That solution is colored yellow over here, just to show you that it's a mixture. It's not just pure water. Now, both of these, when we heat them, both of these evaporate because both were volatile. Don't forget, one was more volatile than the other, but actually both are volatile. So both of the alcohol vapors and water vapors rise up. Now, when they rise up, they tend to go through this another piece of apparatus that we haven't used before. Take a look. This is new piece of apparatus is named as fractionating column, and it has many small beads in it, which they state over here are glass beads. I hope you are familiar with glass beads. ठीक है, glass beads बिल्कुल इस तरह की चीज होती है, beads होती हैं. By the way, girls are more familiar with beads because वो decoration purposes के लिए use करते हैं. Boys इतना familiar नहीं होते हैं. लेकिन beads commonly हमारे necklaces में और especially तस्बीह में, ठीक है, इस्तेमाल होते हैं. So हर कोई familiar होता है beads से. But here the beads are made up of glass. ठीक है, हम glass beads use करते हैं और कोशिश करते हैं कि transparent beads use करें, colored beads use ना करें. ठीक है, so as to make the whole thing see through, and if it's see through we would be able to see what's happening inside it. ठीक है, now it gives us a very good idea that the bottom of the fractionating column has a higher temperature. अपनी videos बंद कर दें. Shahram, turn off your video beta. G. So the bottom of the fractionating column has a higher temperature. Take a look at it. It says 80 degrees centigrade over here. As we go up the fractionating column, the temperature decreases. Now, when the temperature decreases, it would help the liquid to be the vapors to be condensed back into the liquid. ठीक है, सो होगा क्या? दोबारा वापस जाते हैं. एथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 78. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 100. इमेजिन एथनॉल का वेपर भी इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर हो गया, वाटर का वेपर भी इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर हो गया. एथनॉल का वेपर और वाटर का वेपर दोनों ट्रैवल करते जा रहे हैं, रेस लगी हुई है दोनों के दरमियान, दोनों फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते जा रहे हैं. टेक अ लुक एट द हाईएस्ट टेंपरेचर कोटेड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, that is 78 degree centigrade. 78 पर एथनॉल का वेपर फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है. लेकिन वाटर का वेपर जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंडेंस होके दोबारा लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा. वो लिक्विड जो होगा, चूंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा बॉटम पे, और वाटर दोबारा ड्रिप बैक कर जाएगा इनटू फ्लास्क. ड्रिप मींस वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लास्क के अंदर फॉल करेगा. ठीक, तो वाटर जो होता है वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की वजह से दोबारा कंडेंस होके सिस्टम के अंदर आ जाता है.
अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 था। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पर भी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इस वक्त 78 ही है, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है वो वेपर्स की फॉर्म में रहेगा, डिलीवरी ट्यूब के अंदर मूव करेगा, कंडेंसर पर आएगा, कंडेंसर पर आकर वो कंडेंस हो जाएगा। उसकी वजह से कंडेंसर टिल्टेड फॉर्म में रखा है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस इंक्लाइन प्लेन पे ट्रैवल करता हुआ ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क में, सेपरेट फ्लास्क में आ जाएगा। रिमेंबर, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है डिस्टिलेशन में, हम उसे क्या बुलाते हैं? डिस्टिलेट। और जो बच जाता है, जो ओरिजिनल फ्लास्क में, राउंड वाटर फ्लास्क में स्टार्ट में रखा हुआ था, वो क्या होता है? रेजिड्यू। तो होगा क्या? पहले आहिस्ता आहिस्ता सारा एथनॉल एवापोरेट करेगा, हमारे पास यहाँ पर जाएगा, डिलीवरी ट्यूब और कंडेंसर में कंडेंस करेगा, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा और एक सेपरेट फ्लास्क हमारी एथनॉल से फिल हो जाएगी। तब तक यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 78 या 78 के अराउंड रहेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पर सारा एथनॉल आ जाएगा हमारे पास सेपरेट फ्लास्क में, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता हुआ 78 से 80, 80 से 90, 90 से 100 पर जाएगा। जितना अल्कोहल है हमारे पास आ चुका होगा, तब हम इस फ्लास्क को रिमूव कर देंगे, हम एक नया एम्प्टी फ्लास्क यहाँ पर रखेंगे और फिर वाटर जो है वो बॉयल होगा, बॉयल होकर कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर में उसके वेपर्स कंडेंस करेंगे और फिर वाटर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इन दैट वे हमारे पास एक एक करके लिक्विड जो है ना वो कलेक्ट होते हैं। सबसे पहले वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था, जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल था, वो कलेक्ट हो जाएगा। जब वो पूरा कलेक्ट हो जाता है, टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। इसी तरह से हमारे पास स्टेप बाय स्टेप, लिक्विड बाय लिक्विड, एक करके वो लिक्विड्स कलेक्ट होते हैं। सबसे पहले लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड कलेक्ट होता है और सबसे एंड में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड कलेक्ट होता है। इस तरह हमारे पास एक डिस्टिलेट नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास काफी सारे डिस्टिलेट्स आते हैं। जितने मिक्सचर में लिक्विड्स होंगे उतने ही हमारे पास डिस्टिलेट्स आएंगे। जो एग्जांपल हम कर रहे हैं इसमें सिर्फ एथनॉल और वाटर है। पहला डिस्टिलेट एथनॉल होगा सारा और दूसरा डिस्टिलेट वाटर होगा सारा। ये बात सबको अच्छी तरह से समझ में आती है? एनी क्वेश्चन सो फार बेटा? Alright, that means it's clear. आगे चलते हैं, हमारे पास बुक में कुछ lines हैं which need a little bit of explaining. Let's explain that. When a mixture of two is heated, ethanol and water vapors enter the fractionating column. Glass beads in the column provide a large surface area, and that is for condensation. The water condenses and drips back into the system. Evaporation and condensation takes place many times in the vapors, uh, and they rise up in the column. Ethanol passes through the condenser first as the temperature of the column is raised above its boiling point. Okay? However, water condenses in the column, flows back into the flask because the temperature of the column is below its boiling point, which was 100 degrees centigrade. The temperature on the thermometer stays at 78 degrees centigrade until all the ethanol has distilled over. Only then does the temperature on the thermometer rises up to 100 degrees centigrade and the water starts distilling over. When all of the water has distilled over, we can carefully watch the temperature as two liquids, and in this case, we don't call the liquids as liquids, we call the liquids as fractions. Fractional distillation में हम liquids को fractions के तौर पे term करते हैं. This is the special terminology of fractional distillation, and you're going to keep that in mind. रिमेंबर, आप सारी लाइफ में हर जगह पे लिक्विड के लफ्ज को फ्रैक्शन नहीं बुलाएंगे, सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लिक्विड्स को फ्रैक्शंस के तौर पे टर्म करते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है? सो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूरी होती है। इसमें बहुत सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन है। इसमें ये भी एक्सप्लेनेशन है कि एथनॉल पहले क्यों रिसीव होता है। इसमें ये भी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास ग्लास बीड्स क्यों यूज की जाती हैं। इसमें ये भी एक्सप्लेनेशन है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्यों रखा गया है, ठीक है? इसमें ये भी एक्सप्लेनेशन है कि एथनॉल पहले क्यों डिस्टिल होता है और वाटर बाद में क्यों डिस्टिल होता है। So these paragraphs explain too many questions, and these questions are quite common in past papers. ठीक है? तो हमें ये questions बड़े common मिलेंगे past papers में, हमने इन questions को ध्यान से करना है। ये questions सबको समझ आते हैं, अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें बेटा।
All right, I hope that's clear. The last small paragraph for fractional distillation. I mean, let's discuss its use. Fractional distillation is used to separate any solution that contains liquid with different boiling points. The liquid in the mixture with the lowest boiling point, or what we call the most volatile one, distills over first. The final liquid to distill over is the one with the highest boiling point, or what we call the least volatile one. Okay? Fractional distillation can be adapted as a continuous process. We can keep the process on going until there is unless there are liquids to separate, the process will keep going on. And it is used in industrially to separate what? Number one, the various fractions from petroleum. Fractions means different parts of petroleum. Petroleum actually doesn't mean the petrol we use in cars over here. Petroleum means the crude, the impure form of oil that we get from digging the earth's crust actually. And that oil is then separated into many different fractions, many different portions, out of which the petrol we use in cars is the one. There are hundreds of different liquids, solids, and gases we obtain from that petroleum. Petrol is just one of them. See? Number two, in industry, what we do is that we separate different gases from air. Not just air, liquid air. We first liquefy the air, we just convert the gases in the air into liquids, and then we separate those gases. Now, a question might come to a student mind, what are those gases? Remember, you've already studied the composition of dry air in previous classes such as 5 class. That says that the gas which is present most abundantly in air is which one? Can anyone name the gas present most abundantly in air? Nitrogen. Very Oxygen. good. No, nitrogen is the Nitrogen. most abundant one, and the second one is Oxygen. right. Nitrogen is the most abundant air in the gas, most abundant gas in the air, and the second most abundant gas is oxygen. Then comes the other gases, carbon dioxide or neon or hydrogen or whatever that is. Clear? We are also going to discuss that in chapter number 1. There is a study tip at the bottom. Take a look at the study tip. This is very important. And this is a repetition of one of the points that we studied on top of this page, that in fractional distillation, the liquid with the lowest boiling point always distill over first. Important point, important question, a question most common about fractional distillation in the exams. So this concludes our fractional distillation topic.